Good afternoon, students of class 8. Now we are facing a very critical position, that is Corona. Due to this reason, we are not met each other for a long time. But time and tide wait for none. We have to continue our work and you should continue your studies due to some difficulties. Today I start the chapter number 3, that is force and pressure. Force and pressure. You have learnt about the force. What is force? Force is a physical quantity that changes the inertia. What do you mean by inertia? The tendency of a body to keep its position is called inertia. One is inertia of motion, inertia of rest. What do you mean by inertia of rest? The tendency of a body to keep its position at a rest position. And inertia of motion, the tendency of a body to keep its moving position. When a force is applied to a stationary body, the body moves in the direction of the force. जिस साइड में फोर्स अप्लाई होता है बॉडी उसी तरफ मूव करता है. दिस काइंड ऑफ मोशन you have learnt in class 7 is tangential motion. But a force can also turn a body or make the body rotate. The rotational force motion is called also tangential motion. In this chapter we will discuss the turning effect of force. Turning effect के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. We will also discuss the pressure which related to the force applied normally to the surface of the body. The force applied normally to the surface of the body is called thrust. जो normally और perpendicularly जो force apply होता है उसको हम लोग बोलते हैं thrust. Turning effect of force. Turning effect of force. The force you apply does not produce tangential motion in the pencil. In other words, the pencil does not move or get displaced as a whole. Pencil displaced or move नहीं हो जाता है. One point of the pencil remains stationary. एक pencil का एक side पूरा fixed रहता है, while the other points move along the circle. Circle की तरह घूमता है. देखिए हम लोग जो पेंसिल में पेन लेके कोई सर्कल ड्रॉ करता है इसी तरह पिक्चर आता है. You have remember the rigid body does not change its shape when it force act on it. Rigid body के ऊपर जब हम लोग force apply करते हैं उसका कोई shape change नहीं होता है. The fixed point about which the body moves is the pivot, and the line passes through the pivot is axis of rotation. जिस fixed point के ऊपर वो body move करता है fixed point उसको बोलते हैं हम लोग pivot. और जो लाइन पाइवोट के जो लाइन है जो लाइन उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब जिस लाइन के ऊपर वो मूव करता है उसको बोलते हैं एक्सिस रोटेशन. डोर्स आर विंडोज आर हिंग्ड एट द वन एंड व्हेन यू ओपन एंड विल अप्लाई ए फोर्स ऑन द हैंडल अदर एंड. द हिंग्ड एंड इज फिक्स्ड. ये हिंग्ड एंड फिक्स्ड रहता है. दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट व्हिच डोर और विंडोज टर्न्स. Each point of the door or window that is away from the axis describes the circle. जो पीछे रहता देखिएगा हम लोग जब कोई डोर को खुलता है सर्कल की तरह हो जाता है. Force, moment of force. The moment of force is the measure of the turning effect of a force body. The moment of force. It is also called torque or simply moment. Moment of force is equal to force into perpendicular distance from the pivot. Moment of force मतलब moment of force and perpendicular distance from the force applied. मतलब pivot distance from the force from pivot. The distance between the applied force and the pivot. This is simply called torque. Momentum, the distance between the line of action and the force and the pivot is momentum. मान जिस पॉइंट से हम लोग जो पॉइंट पे अप्लाई कर रहा है वहां से पाइवोट का जो डिस्टेंस है उसको बोलता है मोमेंटम. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and the distance of moment is m.
the distance is meter and the SI unit of torque is Newton meter. Clockwise or anti-clockwise movement depends upon the point of application of the force and the direction of the applied force. जिस पॉइंट में फोर्स अप्लाई होता है और डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, दोनों को डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज एंड मूवमेंट. नाउ आई फिनिश माय क्लास हियर. प्लीज स्टे एट होम and keep safe. If any question arise in your mind, please contact with my number. Thank you.